आई डोंट थिंक सो. इसलिए कि जब हमारे पास आई एम अ डॉक्टर एंड व्हेन आई गेट अ पेशेंट, usually patients they come for something else, and I'm looking at them, they are very obese and they have arthralgia, joint pains हो रही हैं, चला नहीं जा रहा, बैसाखी की ज़रूरत है, और पेट में दर्द है, कॉन्स्टिपेशन है, दिस एंड दैट. दे विल नेवर से मैडम मेरा वेट बहुत बढ़ गया है, मैं इसको कैसे कम करूँ, व्हाट शुड आई डू. दे आर नॉट वरीड. ठीक है. एंड सो वी हैव टू बी मोर, वी शुड स्ट्रेस देम. आई मीन प्लीज़ आप पहले अपना वेट कंट्रोल करें. ठीक है. मैं तो अब अपने पेशेंट्स को ये कहती हूँ, फीमेल पेशेंट्स स्पेशली, बिकॉज ये दे डोंट गो फॉर अ वॉक, हेल्दी लिविंग नहीं है, तो उनको मैं कहती हूँ प्लीज़ एक काम करो कि आप अपना भी वज़न कंट्रोल करो, और जैसे हो बहुत खूबसूरत जो स्लिम आती हैं बच्चियाँ, उनको मैं कहती हूँ यू आर वेरी स्मार्ट, बहुत अच्छी बात है, बट यू शुड एडवाइज़ अदर्स. आप उनको खाने पे ना लगाएं, मीडिया में ना देखें, चैनल्स ना देखें, कुकिंग चैनल्स, और डोंट कुक लाइक दैट. ठीक है. और फालतू नहीं खाना, ये सब कुछ बताते हैं, दे आर अर्निंग मनी, बट प्लीज़ डोंट प्रिपेयर ऑल दीज फूड्स डेली और इन रूटीन. ठीक है. कम खाएं और वॉक करें. और जब वॉक करनी सब लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए मुश्किल होती है, और है भी थोड़ा सा हमारा एटमॉस्फेयर ऐसा है, वी डोंट इसको ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करते, डेट वी शुड हैव डेली वॉक. तो मैं उनसे कहती हूँ मैंने ये काम करना है, मैंने उसको अगर आप घर में हैं, वो कहते हैं ये मैडम अब तो मौसम अच्छा नहीं है, सर्दी है, गर्मी है, तो मैं कहती हूँ ये ट्रेडमिल जो है ये कहाँ होता है, बाहर सड़कों पे होता है, अपने बेडरूम में रख लो, उसको ना यूज़ करो, जस्ट वॉक आफ्टर योर प्रेयर्स, जस्ट रन एट द स्पॉट फॉर 5 मिनट्स, और पैदल चल लो, और कमरे में चल लो, कॉरिडोर में चल लो, सर्दी है तो, गर्मी है तो एसी लगा के चल लो, नहीं लगा सकते तो फिर भी चल सकते हो. आई मीन वी शुड टेक केयर, एवरीबॉडी शुड टेक केयर कि हम क्या खा रहे हैं, क्या खिला रहे हैं दूसरों को, इस पर हमें स्ट्रेस देना चाहिए ज़्यादा. ठीक है. करते नहीं हैं लेकिन करना चाहिए. ठीक है. थैंक यू. Well, this is a good question that how to break a stigma of eating disorder. But I actually believe that first of all, we should know whether you have an eating disorder or not. So identify eating disorder, you need to study about it. And I appreciate syntax about that they are just spreading the awareness what actually eating disorder is, and then you need to monitor your routine, how much you are eating, how much you are taking, and how much in which context you are eating actually. So this is very 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 much important that you keep a watch on your meal, and if you think something that all of a sudden you feel all the time hungry and you are eating lots of food, you must be or you might be towards eating disorder. So you must contact with some nutritionist or your doctor or your family doctor to help you out with these things, because this is very very crucial thing to do. It can bring you a real kind of health threat. So I again appreciate Syntax for spreading the awareness. Thank you. First impression is always the last, or not always the last, but sometimes it lasts, and that always have a very good impact as far as the first physical appearance is concerned. So one has to be very careful about it, and it has to be according to the situation. Rather, it has to be a customized. For example, if I'm going to university, I'm going to my workplace, and I'm attending some marriage kind of a ceremony, so I have to adopt a physical appearance differently on different occasions. According to the situation. According to the situation, and that has always iconic. Thank you so much, sir. Thank you. If a person is very strong, mentally strong, he will be able to ignore it. He will, a very confident person, he will know that whatever the person is shaming him for, that is not the real fact. But if we look at the other side of the story, a person who is not so very confident, who is just shy in nature, if he's being shamed, he will take it will affect him mentally. He will be unable to make friends. The first thing before meeting any friend, he will be like, I know this person is going to shame me too. So it will, it's like a pyramid form scheme. It will start small, but it will increase. In society like Pakistan, फैट होना या स्किनी होना काफ़ी मैटर करता है, क्योंकि हम देख के जज कर लेते हैं बंदे को, तो वो जजमेंट जो है वो जब पास होती है तो बंदे की मेंटल हेल्थ काफ़ी तौर पे जो है वो अफेक्ट होती है, और उसका जो काफ़ी रोल होता है उस बंदे का फिर बिहेवियर उस सोसाइटी में, उस डायनामिक्स में बिहेवियर जो है वो
जिस तरह से शेप होता है वो उस जजमेंट का काफ़ी रोल होता है. Thank you so much. Thank you. I would say कि जो scale है it's more pointing towards being fat because body shamming तो होती है और especially teenagers में ज़्यादा होती है. इसी तरह girls जो हैं उनमें body shamming उनके weight की वजह से ज़्यादा होती है I think as compared to boys. और अगर आप देखें underweight को compare करें overweight से तो I think जो overweight हैं उनकी इसी तरह body shamming ज़्यादा है और it's intricately associated with how a person feels और mental health इसी से ख़राब होती है. तो कॉन्फिडेंस लेवल एंग्जाइटी और स्ट्रेस बहुत इंक्रीज़ हो जाता है, कॉन्फिडेंस लेवल ड्रॉप होता है और इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स इंसान में पैदा होता है. तो डेफिनेटली इनकी बहुत क्लोज एसोसिएशन है. Thank you so much. वेलकम. Thank you.